जर्मन में प्रीपोजिशंस कितनी होती है? वो तो मैम गिना नहीं है। नहीं, केसेस जैसे एक्यूजेटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स, ये सब। तो 4 केसेस। हाँ, सो लाइक एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन, डाटिव प्रीपोजिशन, वेक्सल और गेनेटिव प्रीपोजिशंस। ओके, B1 में हमारे पास 4 गेनेटिव प्रीपोजिशंस होती हैं। ओके, और भी होती है, वो आप B2 में करोगे। पहला है वेगन, जिसका मतलब होता है ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ। सेकंड प्रीपोजिशन होती है वेरेंट। नाउ ये वेरेंट हमने एज अ कनेक्टर भी पढ़ा था, करेक्ट? यस मैम, यस, पर ये एज अ गेनेटिव प्रीपोजिशन भी होती है, जिसका मतलब आता है ड्यूरिंग। थर्ड प्रीपोजिशन होती है ट्रोथ्स, जिसका मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ या फिर इन स्पाइट ऑफ। और लास्ट होती है स्टार्ट या फिर अनस्टार्ट, जिसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। नाउ हमको दो चीज पता है कि जब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, करेक्ट? यस। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई या तो नाउन लिखोगे या तो प्रोनाउन लिखोगे। अब अगर प्रीपोजिशन एक्यूजेटिव है तो एक्यूजेटिव केस लगेगा, डाटिव है तो डाटिव केस। सेम अगर गेनेटिव प्रीपोजिशन है उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखोगे उसमें गेनेटिव केस लगेगा। ओके, यस। फॉर एग्जाम्पल पहला वेगन, इसका मतलब है ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ। ओके, सेंटेंस है बिकॉज ऑफ हर चाइल्ड शी इज स्टेइंग एट होम। नाउ यहाँ पर बिकॉज ऑफ हर चाइल्ड ये गेनेटिव में जाएगा, राइट? क्योंकि बिकॉज ऑफ गेनेटिव प्रीपोजिशंस है। वेगन, किंड एज इन चाइल्ड, किंड हो जाएगा। चाइल्ड का आर्टिकल दास होता है। हर के लिए मैं प्रोनाउन यूज करूँ, ओ सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन यूज करूंगी, इहर, राइट? दास गेनेटिव में डेस हो जाता है तो एंडिंग तो सेम रहेगी, ईएस। किंड के साथ ईएस ऐड हो जाएगा, राइट? वेगन, इहरस, किंडस। अब इसके बाद आती है वर्ब, ब्लाइव्ड। उसके बाद आता है सब्जेक्ट जी, सू हाउजर। समझ आया? ओके, ये वाला ट्राई करो। वी आर, ओके, ये वाला सेम सेंटेंस अगर मैं वेगन को बीच में लिखूं ना, सो ये ऐसे होगा, लाइक बेसिकली सब्जेक्ट और ये जो गेनेटिव वाला पोर्शन है इसको हम इंटर स्वैप कर सकते पोजीशन, लाइक जी ब्लाइव्ड वेगन इहरस किंडस सू हाउजर, वो भी सही है। ओके, नाउ वी आर गोइंग, we are not going because of the rain। ये वाला ट्राई करो। इसमें कॉमन ही आता है ना। पहले इसमें वियर गेहन ऐसे आएगा। हाँ, वियर गेहन वेगन और वेगन डैश रेगन हाँ, रेगन्स, निस्ट। करेक्ट। ओके,
और ये निश्ट की पोजीशन यहाँ पर भी लग सकती है, wir gehen nicht wegen des Regens। ओके, वो भी सही होगा। नाउ सेकंड था हमारा während, ड्यूरिंग। मैं उसमें रेगन्स हो जाए, लेस आगे लगाया है फिर। किसमें? हाँ, रेगन्स होगा ना, क्योंकि गेनेटिव में मास्कुलिन और न्यूट्रल के साथ एंडिंग लगाते हैं ना, या तो एस या तो ईएस। यस, हाँ, राइट, यस। सो रेगन में एस लगेगी। ओके, ओके। कमिंग टू सेकंड प्रीपोजिशन जो कि है वेरिंड, which means during। For example, during the party I feel bad। Okay, so wherein ओके, यहाँ पर पार्टिसिप्स आई लगाते हैं। I have felt bad। वेरेंट डेयर पार्टी हो जाएगा, क्योंकि पार्टी का आर्टिकल दी होता है, राइट। यस, वेरेंट डेयर पार्टी habe ich mich schlecht gefühlt। sich fühlen, यस। haben participes haben helping verb लेता है। ओके, नाउ you वाला ट्राई करना। there was an accident during the vacation या holiday। वेरन, No, 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 there was an देयर accident वाज पहले। हाँ, डॉट आएगा मैम देयर का। नहीं नहीं नहीं, एस गाब आ जाएगा ना, क्योंकि एस गिफ्ट होता है देयर इज या देयर आर। सो एस गाब पास्ट। एज एज गब वेरन डैश urlaub and einen Unfall। करेक्ट, आइनन उनफाल सही है। और इन दोनों को स्वैप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एस गाब आइनन उनफाल वेरन डेज उर्लाउब्स, वो भी सही है। ओके, नाउ थर्ड वाज ट्रूथ्स, which was despite या फिर in spite of। For example, despite of bad weather she is going to the work। सो ये वाला गेनेटिव में चले जाएगा, ट्रूथ्स स्लेशटस वेटर्स डेज। ओके, ट्रूथ्स डेज, सॉरी, एडजेक्टिव एंडिंग en।
वेदर का आर्टिकल दास होगा, सो डेज, ट्रोड्स डेज स्लैश टन, बेटर्स गेट जी zur arbeit, करेक्ट? एनी डाउट? ये जो ई है ना वो एडजेक्टिव एंडिंग है। ओके। इस वाले एग्जांपल में कोई डाउट? मतलब वेदर बैड है इसलिए वो वर्क नहीं। प्लीज रिपीट। वेदर बैड है हाँ, फिर भी वो वर्क है ऐसा। एग्जैक्टली। ओके। नाउ सेकेंड वन, she is going to the party despite of her headache. हेलो। यस, ये वाला ट्राई करो। She is going to the party despite of her headache. जी गेट फ्रूट्स Z gate. फ्रूट्स हेडेक कॉप्समेजन So, dare आएगा, डेर दी आर्टिकल होता है। कॉप्समेजन सूरपाट। करेक्ट, Kopfschmerzen zur Party. Now last was unstart. Meaning is instead of. Okay, for example, instead of, okay, say he has bought a dog instead of a cat. So यहाँ पर पार्टिसिप्स आया जाएगा, so यहाँ पर होगा एयरहार्ट स्टार्ट eine er hat eine Katze start eines Dog के लिए der Hund, so eines Hundes gekauft. Okay? ओके। कोई डाउट? नो। Okay. Try this one. Instead of a car, I buy a motorcycle.
ये स्टार्ट पहले आ जाएगा ना. हाँ करेक्ट. स्टार्ट eines Auto kaufen. Autos. Kaufe. Autos kaufen. Ich Hmm. ich habe ein Motorrad gekauft. नहीं नहीं, यहाँ पर काउफर नॉर्मल है, लाइक व्हाट इज दिस, प्रेजेंट फॉर्म. सो Gekauft. काउफर इश Ich ein Motorrad. ein Motorrad. Yes. Any doubt? No. Okay, you can take the screenshot. Hmm. Then Then ये वाला. then Last. okay then. Then okay, then बाकी we will do in Monday's class. Okay. मैम इसकी कोई एक्सरसाइज होगी तो शायद करूँगी. मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी. You will be doing that. Okay. Okay. Yes. Okay then, bye bye. Have a great day. Okay. Bye bye. Yeah. Thank you. Mhm.